Former Tamil Nadu Chief Minister's aide Sasikala has now announced that she will be returning to politics after COVID subsides. The announcement came during a conversation with a member of the party. Take a look at this report. A fresh political twist may be in offing in Tamil Nadu, which may escalate the Amma legacy war. Shashikala Natarajan, former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha's aide, is plotting an unexpected return to active politics. Chinnamma dropped the bombshell during a phone conversation with a supporter. கண்டிப்பா கட்சி எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம். சரிங்கம்மா சரி, தைரியமா இருங்க எல்லாரும். சரிங்கம்மா, ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா இருக்கணும். உங்களுக்காக குடும்பம் ஃபுல்லா காத்திருக்கு. உங்க பின்னாடி தான் நாங்க இருப்போம். சரிம்மா, சரி. ரொம்ப நன்றிமா. ஜாக்கிரதையா இருங்க, உங்க வீட்லயும் ஜாக்கிரதையா இருங்க. சரிங்கம்மா. ரொம்ப மோசமா இருக்குப்பா. ஜாக்கிரதையா இருங்க. சரிங்கம்மா, பிறப்புக்கு நீதான் விடிய காலம். சரிப்பா, நிச்சயம் வந்துருவான்ப்பா. சரிங்கம்மா, ரொம்ப நன்றிமா. வணக்கம். சரிங்க. In another phone conversation, she was heard reassuring supporters, promising to stop AIADMK from wilting away. இல்ல, முடிவெடுத்து சீக்கிரம் வந்துருவோம்ப்பா, கவலைப்படாதீங்க. ரொம்ப நன்றிமா. தைரியமா நீங்க முடிவு எடுங்க. நீங்க நிச்சயம். ஆமா. அவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு. கண்டிப்பா, ரொம்ப உங்களுக்காண்டி தான் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கெல்லாம் வளர்த்தோம்ப்பா அந்த கட்சியை. கண்டிப்பாமா. அதனால அது வீணா வரதை என்னால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா. அதனால விரைவில் வந்துருவேன். சரிம்மா. கொரோனா தாக்கமும் கொஞ்சம் குறைஞ்சது, நான் எல்லாரையும் பாக்குறேன். The former AIADMK General Secretary completed her jail term in a disproportionate assets case in January and returned to Tamil Nadu in a big procession in February, making her intentions clear by using AIADMK car with Jayalalitha's photo. Then CM EPS had vowed not to allow Shashikala's entry into AIADMK. அவர்கள் கட்சியிலே இல்ல சார். இந்த 7 பேர் அதிமுக கட்சியிலே கிடையாது. சசிகலா அவர்கள் அதிமுகல சேர மாட்டாங்க, அவங்க நாங்க 100% கிடையாது. அதாவது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது தெளிவாக முடிவு செய்யப்பட்டு இன்னைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்க்கின்ற பொழுது பெரும்பாலான பேர் அந்த இருந்தெல்லாம் அதிமுக ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. சில பேர் அவரோட இருக்காங்க. Shashikala had shied away from a showdown with EPS weeks before the state polls, announcing her retirement from active politics. Will it be a full-fledged legacy war this time for reigns of AIADMK, which suffered a loss in state polls? A very interesting factor, instead of a statement or giving out a public statement, she has spoken to the loyalists, and through these phone calls she has made sure that once the issues related to pandemic corona subsides, she will come back to politics. With video journalist Divyan, Pramod Madhav for India Today. th of May marks 7 years of Modi government at the centre. The BJP resorted to a subtle celebration observing COVID Seva Divas, while an unhappy opposition hit out at the Modi government over its failure in dealing with the pandemic. The politics peaks amid pandemic with a raging war of words between the BJP and the Congress. Here's more. Amid the pandemic fight, BJP marked 7 years of Modi government with public service, holding COVID Seva Divas with big outrage in rural areas. साथियों, इन 7 सालों में Addressing the occasion of PM's radio show Man Ki Baat, Narendra Modi cited India's growth in national security achievements as moments of national pride for all. He further vowed to win the fight of COVID pandemic and the challenges being faced by the nation, calling COVID the worst crisis in a century. इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं
और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। But an unimpressed opposition slammed the BJP government, accusing it of all-round failure and completely ignoring people's plight. Congress staged protests in Mumbai and Bhopal against Modi government, blaming prices of essential commodities. Rahul Gandhi even took a move-it jibe at the government, claiming dictatorial approach by Modi government. Modi government has only given us pain. Modi government has only given us suffering. And Modi government has decimated the very edifice of democracy in this country. Refuting the charges, BJP chief JP Nadda accused the opposition of demoralizing India during pandemic fight and promoting fear of vaccine. Referring to COVID relief by BJP, Nadda said opposition only does virtual press conferences in quarantine. हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। Large part of Modi 1 and Modi 2 government has been based on the popular wave and tough decisions. But the Modi government has met its toughest challenge in the name of the pandemic. And it's still not over yet. Even though the opposition has been tearing into the government for non-performance, the challenges may not be limited to just the third wave and the vaccination drive. It will also include other challenges, including price rise, inflation, job losses and employment. This now needs to be met with firm stance and leadership. The government as well as the country is now looking forward to Prime Minister Narendra Modi's firm decisions. With camera person Sanjeev, this is Kamaljeet Sandhu in Delhi for India Today. Well, there is no end to troubles for fugitive diamond merchant Mehul Choksi. Antigua and Barbuda Prime Minister Gaston Brown has now claimed that Choksi left Antigua with his girlfriend, but he was caught in Dominica. India Today TV has also accessed some photographs where he's seen behind bars and has injury marks on his body. Munish Pandey with this report. Trouble mounts for fugitive businessman Mehul Choksi, lodged in a Dominican jail. On Saturday, the first images of the diamond tear surfaced from behind the jail. A bruised Choksi could be seen with a red eye and lacerations on his arm. A pale shadow of his earlier self, Choksi appeared visibly thin and almost dazed behind bars. The PNB scam accused's lawyer alleged that he was abducted from Antigua and forcibly taken to Dominica and was badly beaten up. A claim denied by the Antiguan police chief. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left to. Antigua PM Gaston Brown, however, claimed that Choksi was on a pleasure trip to Dominica with his girlfriend, but was captured there. He even claimed that Choksi has been bribing Antiguan opposition to cut a deal for freedom. The Dominican government has a free hand to act. In fact, Mehul Choksi may have made a mistake to travel to Dominica. The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. What is happening here, is that they are literally defending the campaign money. So here's a situation in which Choksi had the best law firm representing him. But some UPP individuals befriended him, started to take money from him, small contributions.
and he promised them big contributions since they told him that they will get their UPP lawyers to get him off the hook, and that if they win the next general elections, that they will protect him. Now an Indian plane awaits for Choksi in Dominica, with documents from Indian courts to confirm that Choksi is a fugitive, which may lead to his deportation to India. I can confirm that there is a jet there. My understanding is that the Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. And my understanding, the documentation will be utilized in the court case that will be heard, or the court hearing next Wednesday. But opposition leader in Antigua slammed his government for requesting direct extradition of Mehul Choksi to India, claiming that Choksi is a citizen of Antigua. The fact is, the process started here in Antigua quite rightly with a request from the Indian government. Mr. Choksi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. This is a golden opportunity for India to bring back Mehul Choksi, because if he goes back to Antigua, then the extradition proceeding will take years to get over. While Mehul Choksi is using the alleged torture marks on his body to avoid coming back to India, the Indian authorities, according to sources, are already in Dominica to convince the authorities and court there that he is a mastermind of a very serious crime and he should be deported back to India as soon as possible. With Geeta Mohan, this is Munish Pandey in Delhi for India Today. Well, Cyclone Yas has ebbed in Bengal, but the politics still rages on. India Today has learned from sources that Bengal Chief Secretary Alapan Bandyopadhyay is unlikely to join North Bloc in Delhi tomorrow, and Alapan is expected to defy the central directive. He is set to join Mamata Banerjee at the State Secretariat in Nabana instead. And if sources are to be believed, then Alapan may get a role in the TMC government. The centre had given the top Babu a deadline till tomorrow to report in the North Bloc. Alapan was recalled after a controversy broke out between Prime Minister Modi and Mamata Banerjee over a review meeting on Cyclone Yas. On Friday, Mamata, along with Alapan, allegedly did not attend the review meeting, citing other appointments, and also made Prime Minister Modi wait for 30 minutes. In her defence, Mamata Banerjee has said she took permission from the Prime Minister to leave. Earlier, Bengal government had asked for a 3-month extension for the Chief Secretary, which the centre had cleared. আমি আপনাদের কাছে নমস্কার করে বলবো প্রাইম মিনিস্টার স্যার, যদি আপনার এনি রাগ আমার উপর কোনো রাগ থাকে, আপনার দুটো পা ধরলে যদি আপনি খুশি হন, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। প্লিজ প্রাইম মিনিস্টার দয়া করে এই নোংরা খেলা খেলবেন না। আর চিফ মিনিস্টারের বিরুদ্ধে, এই চিফ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে যে পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা নিয়ে আপনারা রাস্তায় নেমেছেন, সব মনে রাখবেন এই পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা আপনাদের শেষ হোক। আমি আবেদন জানাচ্ছি, উইথড্র দিস লেটার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মুখ্য সচিব সহ আধিকারিকবৃন্দ যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে এবং ভারত সরকারকে অপমান করেছেন, এই নিন্দার কোনো ভাষা নেই। এই অসত্য তথ্য তিনি পরিবেশন করে, ভুল তথ্য পরিবেশন করে শুধুমাত্র ওনার যে অ্যারোগেন্সি এবং পেটি পলিটিক্স, সেটাই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। অপমানিত কে? উনার মান সম্মান বোধ আছে, তাহলে বাকিদের মান সম্মান ভাবা উচিত। উনি প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে এখন পায়ে ধরতে চাইছেন, কোমরে দড়ি বাঁধতে চেয়েছিলেন এক সময়। প্রধানমন্ত্রী ওনার রাজ্যে এসছেন, ওনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, উনি তো একটু দেরি করে গেছেন, তারপরে দেমাগ দেখিয়ে গিয়ে একটা হাতে কাগজ দিয়ে চলে এসছেন। কে কাকে অসম্মান করলো? প্রধানমন্ত্রী কোন রাজ্যে গেলে তার সঙ্গে কী ব্যবহার করা উচিত, সেটা তো নবীন পটনায়ককে দেখে শেখা উচিত। উনি এসেছেন, সঙ্গে ঘুরেছেন এবং এটাও বলেছেন যে আমরা কেন্দ্রের কাছে কোনো আর্থিক বোঝা চাপাবো না, এই করোনার সময় আমরা নিজেরা সামলে নেবো। মমতা ব্যানার্জি বড় ফিরিস্তি দিচ্ছেন 20,000 কোটি টাকা, টাকা দিচ্ছে না আমাদেরকে, আমাদের এত ক্ষতি হয়ে গেছে, টাকা ঝগড়া অপমান, তার বলছেন উনি অপমানিত হয়েছেন। উনি কি করে অপমানিত হন? মান সম্মান বোধ আছে ওনার? Entire thing is totally malafide. Political vindictiveness is there.
If the mask is open, Narendra Modi's mask is now being opened each and every day. In Bengali, there is a proverb, there is a poetry. Title is Ulanga Raja. He is that. It's time for a quick break here. Much more news in just 2 minutes.